Okay, welcome to class number 34. It's a very important class, ethics and international relations. तो ये important है from the perspective of GS2. GS4 में क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी पे क्वेश्चन आ सकता है. They can ask you a generalized question on ethics in international relations. They can ask you a very general question that what do you mean by ethics in international relations? What are the facets of ethics in international relations? How do you are going to deal with ethical dilemma in international relations? What are the values governing ethical dilemma? Or yeah, they can give you a case study that you are a head of state or you are a diplomat or you are a something XYZ that has been presented with this situation जहां पर आपको certain decisions लेना है, national interest versus global interest. Okay, एक क्वेश्चन आता है ethics in international relations का core क्वेश्चन अगर मैं देखूं, so that is national interest versus global interest. ओ या ग्लोबल इंटरेस्ट को क्या हम बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज इम्पोर्टेंट, नेशनल इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है? ओके, नेशनल इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है या ग्लोबल इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है? what is important? Okay, national interest. VS is saying national interest. Anyone else? Anyone else? Shiva is also saying national interest. Okay, Prince is also saying national interest. कोई ग्लोबल इंटरेस्ट बोल रहा है? ग्लोबल इंटरेस्ट नो. सपोज ह्यूमैनिटी का इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू नेशनल इंटरेस्ट. बैलेंस होना चाहिए. दैट इज ऑल्सो अ वेरी वैलिड स्टैंड. ओके, दैट इज एक्चुअली अ बेटर स्टैंड. देखो, नेशनल इंटरेस्ट वी ऑल आर फ्रॉम जो डेमोग्राफी से हैं हम, इस डेमोग्राफिक से हम आते हैं, फ्रॉम द काइंड ऑफ डेमोग्राफी. ओके, Mr. Paul, would you be kind enough to like switch off your mic? I cannot switch off from my end. Okay, if you can switch off your mic, then it will be better for us, because फिर आपका वीडियो रिकॉर्डिंग में आपका आने लगेगा. Anyways, चलो, it seems that he cannot hear us. Anyways, यहाँ पर एक इशू है that okay, since we are a demographics which is a nationalist demographics, हम मिडिल क्लास हैं, we love our country, तो हम बोलते हैं यार इंडिया का इंडिया का जो इंटरेस्ट है that should be above anything else. Okay, that should be above anything else. So लेकिन आप अगर किसी दूसरे से पूछोगे who is from a higher category, from a higher income category, or who has a very liberal, all right, who has a very liberal outlook. So the thing is, वो बोलेंगे नहीं, global interest or the interest of humanity should be above everything else. This I'll give you some situations towards the end and I'll ask you your opinions on that, and then through discussions we will move on. उससे पहले हम कुछ फेसेट्स देख लेते हैं, कुछ अप्रोचेस देख लेते हैं. ओके, हम दो अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे, which are the approaches of ethics and international relations. Okay, उन दोनों के बारे में, दोनों contrasting approaches हैं. But first of all, let us see what is international relations. So international relation is concerned with the relations of one country across its boundary or with other country. एक कंट्री का रिलेशन दूसरे के साथ. ओके, एक कंट्री का रिलेशन दूसरे के साथ, एंड अक्रॉस इट्स बाउंड्री, मतलब हो सकता है नेबरहुड, नेबर्स के साथ उसका रिलेशन, और अक्रॉस द बाउंड्री. ठीक है, हो सकता है दूसरे कॉन्टिनेंट में कोई कंट्री है उसके साथ रिलेशन, है ना. और नेबर्स के साथ रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है, एंड द रिलेशंस विद अदर कंट्री, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, it is a multidisciplinary field and deals with international political economy, governance, intercultural relations, national and ethnic identities. एक multidisciplinary field है. When you will become an IFS officer, foreign service officer, तो आप देखोगे कि there are multiple departments in your embassy. आपके embassy में there are multiple departments. There is a political department, there is a cultural department, okay, there is a defense department,
देयर इज अ एन एनर्जी डिपार्टमेंट ऑल्सो. अभी हमने रिसेंटली बहरीन में, ओके, बहरीन में वी हैड ओपन वन डिपार्टमेंट इन आवर एम्बेसी, एंड अ पेट्रोलियम एक्सपर्ट, ओके, a petroleum expert was said to be posted there. उसी तरीके से हम जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ओपेक कंट्रीज हैं, वहां पर एक ओएनजीसी का या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का एक्सपर्ट वहां पर हम अटैच कर रहे हैं ताकि बेटर रिलेशंस हम कर सकें. एंड सिंस इंडिया इज अ नेट कंज्यूमर ऑफ ऑयल, ठीक है, तो एनर्जी इन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो इसी तरीके से आप देख रहे हो मल्टी डिसिप्लिनरी है. एम्बेसी में इतने सारे डिपार्टमेंट्स क्यों हैं? बिकॉज foreign service or international diplomacy, international relations, it's a multidisciplinary field. Okay, it allows nations to cooperate with one another in terms of resources and function in a way to face global issues together. इंटरनेशनल रिलेशंस क्या करता है? कॉपरेट करने के लिए, ओके, हमें मोटिवेट करता है. इन द अर्ली टाइम्स देयर यूज्ड टू बी अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट वॉर. इफ यू वुड हैव रेड द हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री सही से पढ़ोगे, you will realize that all the neighboring states, they used to be constantly at war with each other. कभी वो XYZ स्टेट है, सपोज राजस्थान का, so it used to be war with some other state in राजस्थान. कोई तमिलनाडु का चोला किंगडम है, इट यूज टू बी इन परपेचुअल वॉर. मतलब वॉर चलते ही जा रहा है. बट आज के डेट में, ड्यू टू सर्टेन एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स, जो नेशन स्टेट्स हैं, जो नया नेशन स्टेट्स का कंसेप्ट आया था, जो कि एक वेस्टर्न, ओके, नेशन स्टेट का कंसेप्ट इज नॉट एन इंडियन फेनोमेना और ओरिएंटल फेनोमेना, ईस्टर्न फेनोमेना नहीं, इट्स अ वेस्टर्न फेनोमेना. ओके, अगर मैं बात करूं, सर्टेन ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, राइट, या ट्रीटी, अगर आप बात करोगे, इट गोज बैक टू द 1600s. ठीक है, नपोलियन जब वॉर में लॉस, व्हेन नपोलियन लॉस्ट द वॉर, ओके, एंड द पीपल दे केम टुगेदर, उसके बाद से जो हमारा मॉडर्न नेशन स्टेट्स है, ओके, उसका एक तरीके से एक फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ. So it's a very Western phenomena and it's a very modern phenomena, और it allows you, okay, it allows you to cooperate with one another. तो वो डिप्लोमेसी जो है, मॉडर्न डिप्लोमेसी, ऑल्दो पहले भी डिप्लोमेसी होती थी. अगर आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखोगे, इफ यू विल लुक इनटू कौटिल्य अर्थशास्त्र, तो वहां पर भी डिप्लोमेसी कैसे करना है, ओके, कौन से स्टेट के साथ कैसे बिहेव करना है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली दिया हुआ है. I highly recommend that you go and see for yourself कि डिप्लोमेसी की, ओके, ही सेज की, कौटिल्य सेज की, जो जिस कंट्री के साथ, ओके, जिस या स्टेट के साथ आप इक्वल फुटिंग पे हैं, या आप लोग इक्वली स्ट्रांग है, एंड इफ यू आर गोइंग टू वॉर विथ ईच अदर, देन यू आर अश्योर्ड ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, तो उसका रिस्पेक्ट करो. जिस कंट्री या स्टेट के साथ आप आर एट एन एडवांटेजियस पोजिशन, तो उसको इन्वेड करो. अगर छोटा है तो इन्वेड करो, या उसको सबस्यूम कर लो, या उसको बोलो कि नाउ यू आर माई वसाल. और थर्ड, ही सेड, अगर कोई स्टेट आपसे ज्यादा पावरफुल है तो उसको अपीज करो. So that this is the beautiful approach of Kautilya, which is given in his Arthashastra. But modern diplomacy थोड़ा सा ज्यादा complex है. Okay, you cannot invade now. In today's case, you cannot invade country at your will. पहले क्या होता था? पहले जंग का ऐलान कर दिया जाता था शंख बजा के. ओके, दे यूज्ड टू ब्लो द conch shell and they used to go and fight the wars. अब पॉसिबल नहीं है. देयर आर सिवियर रिपरकशंस. ओके, देयर आर सिवियर रिपरकशन. आपने देखा रशिया के केस में क्या हुआ था. यू कैन नॉट डिक्लेयर वॉर एंड गेट अवे विथ इट, बिकॉज व्हाट इज द रीजन? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रीजन व्हाई यू कैन नॉट डिक्लेयर अ वॉर एंड गेट अवे विथ इट? क्या रीजन है? कुछ होगा ना, कि क्या अभी रशिया में वॉर हो रहा है तो हमें क्या मतलब? अरे यार, वीएस, वेरी गुड, excellent, that is the answer I was looking for. Globalization. Now we are interconnected. रशिया में वॉर हुआ तो हमें क्या हुआ? हमारे वीट के प्राइसेस बढ़ गए. वी ऑल्सो फेल्ट द ब्रंट. ठीक है, रशिया में वॉर हुआ, फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ गए, बिकॉज रशिया वाज एक्सपोर्टिंग इट. रशिया एंड यूक्रेन वेर एक्सपोर्टिंग वीट्स. ओके, ओके, सॉरी. ठीक है, यू हैव टू सी दिस थिंग.
दैट नाउ यू आर इंटरकनेक्टेड. चाइना और यूएस का कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, इफ यू गाइस रिमेंबर, ट्रेड वॉर्स. तो उसमें क्या हुआ? ग्लोबल चिप शॉर्टेज, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग क्राइसिस. यस. तो ग्लोबलाइजेशन के वजह से वी आर इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड. वी आर increasingly interconnected. Okay, that is the reason you cannot start a war and get away with it. Okay, you cannot start a war and get away with it as easily as you would have done 150 or a 200 years back. Importance of ethics in international relations, let us discuss this. So morals are established notions of what is right. Okay, morals kya hai? They are established notions of what is right, whereas ethics is the practical application of established morals. जो morals है वो है क्या? Basically notions है which have been established of what is right and what is wrong. जब उसका आप एक practical application डालते हैं, when you make a practical application, then it becomes ethics. Okay, so ethics in international relation is basically the practical application of those established morals. So ethics is crucial in international relation as the military, commercial and diplomatic actions of nations have a profound and deep impact on the lives of common people around the world. I gave you the example wheat, that Russia is thousands of kilometers away from, say, India. Okay, but the actions of Russia had a deep and profound impact on the lives of the common Indian. The petrol prices, they got up. The inflation, it got up. तो का एवरेज जो है आम आदमी जिसको हम बोलते हैं, he got in a in a bit of a issue. Why? Because someone thousands of kilometers away decided that he had to go to war for some reasons. Okay, whatever reasons it might be. ठीक है. So ये पहले नहीं होता था. This used to be not the case because पहले global shipping routes उतने develop नहीं थे. So people had to look for, okay, people had to look for local supplies. तो मान लो कि आप आपकी कंट्री है, ठीक है, तो आप पहले क्या था, that you have to look for supplies from the neighboring country कि आसपास से कुछ आ जाए, चावल आ जाए, गेहूं आ जाए, आटा आ जाए. But now, since global shipping routes have been so much developed and global shipping standards, now the ships are faster, the ships are more complex, they can carry more tonnage. So now we are exporting things from far away nation. Yes. तो पहले के जैसा नहीं था. प्लस वी now the earth has to support a larger population too. ये भी एक इशू है. और देर इज अ सर्टेन, बहुत ध्यान से सुनना ये वाले पॉइंट, देर इज अ सर्टेन मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड पीपल हैव गॉटन यूज्ड टू. आपके ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर जितने प्रॉब्लम में थे ना, उसका आप 1% भी प्रॉब्लम में नहीं हो. देर यूज्ड टू बी स्टारवेशन, फैमिन्स. योर ग्रैंडफादर्स एंड ग्रेट ग्रैंडफादर्स, दे सॉ मल्टीपल फैमिन्स. तो उनका एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स लाइफ वाज नॉट दैट मच. Whereas आपने क्या देखा है, you as a generation has seen only abundance. कि अच्छा खाना क्या होता है, खाना तो आ जाता है, चावल तो आ जाता है, रोटी आ जाता है, गेहूं आ जाता है. What is that? I don't understand. What are you saying? What is crisis? What is what is this crisis that you are talking about? Am I right or not? Are you guys not accustomed to only abundance? Being a middle class person, okay, being a middle class person in a respectable economy, you are now accustomed to certain minimum living standards. ठीक है. Yes. आज के डेट में आप जो एसी चलाते हो, कूलर चलाते हो, this 100 years back, this was this was only a thing of royalty. उन्हीं के पास एसी होता था 100 years back. आपको एक, I was reading this article where
महात्मा गांधी ही वेंट टू दिस वाइसरॉयज हाउस, ओके, इरविन के घर गए थे शायद, लॉर्ड इरविन के घर गए थे इन दिल्ली, एंड ही स्टार्टेड द एसी। उस समय बहुत एसी नया नया आया था, एंड ओनली वाइसरॉयज हाउस हैड दैट एयर कंडीशनर, एंड महात्मा गांधी ही सेड कि प्लीज बंद कर दो, ओके, आई डोंट वांट दिस, आई एम नॉट अकस्टम्ड टू दिस, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो दैट वाज ओके। आज के डेट में एसी इवन एक लेबर क्लास के घर में भी आपको मिल जाएगा। आप जाओगे दिल्ली के स्लम्स में तो यू कैन सी दोज split AC units hanging from the chawls, right? बॉम्बे में आपको दिख जाएगा। तो 100 सर्टेन बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स हम अकस्टम्ड हो गए, दैट्स व्हाई वी गेट अफेक्टेड, दैट इज द रीजन we get affected by the decisions of some leader thousands of kilometers away. Okay. Following an ethical code of conduct can provide resolution of differences and avoid chances of an armed conflict. आर्म्ड कन्फ्लिक्ट से बचा सकता है, बेसिकली डिप्लोमेसी बोल रहा है, डिप्लोमेसी के फायदे गिना रहा है। इट इज टेलिंग यू, ओके, इट इज टेलिंग यू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ डिप्लोमेटिक अप्रोच। दैट आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, आपने देखा था ऑपरेशन पराक्रम क्या हुआ था 2002 में, जब हमारा पार्लियामेंट पे अटैक हो गया था, वी ऑलमोस्ट वेंट टू वॉर, वी ऑलमोस्ट वेंट टू वॉर, एंड देन आपने देखा होगा कि कैसे, ओके, ये मुशर्रफ इंडिया आए, आगरा समिट हुआ, ओके, देन डिप्लोमेसी वाज डन एंड एन ऑल आउट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ओके, इट वाज थ्वाटेड। उसी तरीके से चाइना के साथ गलवान के समय, चाइना के साथ 1986 में राजीव गांधी के समय, वी ऑलमोस्ट वेंट टू वॉर विद चाइना, एंड एट दैट टाइम वी वर एक्चुअली एट एन एडवांटेजियस पोजिशन वीजा वी द चाइनीज। उस समय चाइना की हालत 1980s में खराब थी, उस समय इंडिया वाज एट अ बेटर पोजीशन, लेकिन हमने संयम से काम लिया, एंड वी रियलाइज्ड दैट इफ वी गो टू वॉर विद चाइना, बोथ साइड्स आर गोइंग टू गेट एनाहिलेटेड। तो हमने क्या किया, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट को रोका बाय फॉलोइंग सर्टेन एथिकल स्टैंडर्ड्स, दैट ओके वी आर गोइंग टू डिसआर्म, ओके, हमने साइन किया विद चाइना, ओके, वी साइन सर्टेन अग्रीमेंट्स दैट ओके विद इन दिस बाउंड्री एरिया वी आर नॉट गोइंग टू बेयर आर्म्स, आपके सोल्जर्स भी आर्म्स गोली बंदूक के साथ नहीं आएंगे, हमारे सोल्जर्स भी नहीं आएंगे। तो दोनों ने एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। You can formulate ethical standards, but if it is not enforced or followed, if it is not enforced or followed, then nothing can be done. Okay. In modern times of globalization with greater interdependence, so that is what we have said, where unethical behavior affects the whole world, nations have shared responsibility. Exactly. चाइना इंडिया सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, चाइना पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया पाकिस्तान, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर, रशिया यूक्रेन, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर ओनली, they are responsible for the global world, okay, they are responsible for the global population. Ethics serve as a source of conscience for any head of state while facing a moral dilemma during crucial decision making. Should I drop this nuclear bomb? ट्रूमैन का क्या था, ट्रूमैन वाज द प्रेसिडेंट, यस, ड्यूरिंग द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। So Truman had a choice to make. Okay, if you would have seen Oppenheimer, अभी Oppenheimer एक बहुत अच्छी मूवी आई है, you can see that. उसमें क्या बोल रहा था जो वो बंदा है Oppenheimer, that it was our duty to make the bomb. As scientists, it was our duty, साइंटिस्ट हैं हम, हमारी ड्यूटी क्या है, बॉम्ब बना देना, उसको यूज करना, और उसको कैसे यूज करना, और उसको कहां तक यूज करना, use where, use what, or use to what extent, it is up to the politician, it is not our job. He says in the movie that it is not our job as scientists to deliberate on this, it is the ethical dilemma of the politician. And he says to Truman, Oppenheimer, he goes to the White House and he says to Truman that, Mr. President, I am in a very ethical dilemma. What to do? And Truman looks him in the eye and said, don't you understand
that it was you who made the bomb, but it was I who gave the go ahead to kill so many people. I cannot sleep at night. Okay, the blood is on my hands basically. So जब भी moral dilemma होता है, ethical standards or ethics can serve as a source of conscience, as a source of guidance for a leader. मोदी जी को अगर लगे सपोज कल को वॉर पे जाना है, ठीक है, सो मोदी जी हैज टू डिसाइड, शुड आई गो टू वॉर विद पाकिस्तान, शुड आई नॉट, should I go to war with Pakistan, should I not? He will have to weigh the pros and cons from an ethical viewpoint. पाकिस्तान में भी लोग हैं, राइट? पाकिस्तान में भी लोग हैं, उनके भी सोल्जर्स के बच्चे बीवी हैं, राइट? उनके भी रिलेटिव्स हैं, बूढ़े माँ बाप हैं. इन अ वॉर दोनों तरफ लोग मरेंगे, है ना? कोई भी आप ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान से वॉर होगा और इंडिया का 0 कैजुअलिटी होगा एंड पाकिस्तान का 100 गजिलियन कैजुअलिटी हो जाएगा. इंडिया विल कम आउट विक्टोरियस, ऐसा तो नहीं होगा. इंडिया विल ऑल्सो हैव सर्टन नंबर्स ऑफ कैजुअलिटीज. तो मोदी जी हैज टू सी, ओके, मोदी जी हैज टू सी वेदर दिस वॉर इज नेसेसरी और नॉट. अगर एब्सोल्युटली नेसेसरी है, जैसे 26/11 में इट बिकेम एब्सोल्युटली नेसेसरी फ्रॉम एन एथिकल स्टैंड पॉइंट की नहीं, ऐसे दे आर ब्लीडिंग अस बाय 1000 cuts, तो आर एयरफोर्स वॉज रेडी टू बॉम्ब कराची. ऐसा from certain sources you can see that there was murmurs and there was a rumor that our air force was on standby to bomb Karachi and important centers. Okay, and Manmohan Singh ji, he decided otherwise. He said that इसको हम लोग दूसरे ढंग से सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग एक लीगल वे में सॉल्व करेंगे. ओके, वी विल सेंड डॉजियर टू पाकिस्तान, ओके, एंड दे विल यूज इट एज अ टॉयलेट पेपर. तो ये डिसीजन हुआ था, ठीक है. So, lack of ethics in decision making, along with end, justifies the mean. Okay, attitude leads to hostile and violent outcomes, ending in wars and genocide. So, यहाँ पर क्या होता है that leaders, they have a very end justifies the means attitude. That okay, I am going through this decision. Suppose अभी पुतिन का देख लो. पुतिन क्या कह रहा है दैट ओके, आई विल वेज अ ब्लडी वॉर, आई विल वेज अ ब्लडी वॉर वेयर thousands and thousands, okay, around 200,000 people have been killed, 2 लाख लोग मर चुके हैं, and that is catastrophic for Russia and Ukraine. Why? Because they were already sparsely populated country with a declining male population. आज के डेट में because of this war, now Russian women and Ukrainian women, they have to fill up roles which were traditionally allocated to men, because वहां पर पहले से ही men की कमी थी. अब क्या हो रहा है, now 2 lakh men have already died. 2 lakh men in the 18 to 40 age group, the most productive age group. So this end justifies the means attitude. That okay, I want to secure breathing space for Russian speaking population. I want to secure a buffer state against NATO expansionism. उसके लिए मैं एक bloody war लड़ूंगा rather than relying on diplomacy. So this was a choice that Putin made, and he has to live with the consequences. From an ethical standpoint, he thought it was okay to go to war rather than relying on diplomacy. अब ये कितना ठीक है कितना गलत है, if you will ask 10 people, they will give you 10 different viewpoint. तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या पुतिन ने सही किया. ओके, इंडिया में देयर आर लॉट ऑफ फैन बॉयज, तो दे विल से यस पुतिन ने ठीक किया, ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए. यूएस बहुत हमारे इश्यूज में करता है. if you will ask someone, okay, who has a different viewpoint, they will say नहीं, पुतिन ने गलत किया. Putin should not have gone to war. He should have relied on diplomacy and negotiations. Okay. Yes. So all the state, okay, let us talk about the international ethical standards. उससे पहले let me give you the approaches to international ethics.
यस। सो दो अप्रोचेज है जिनके बारे में हम बात करेंगे, एंड आई थिंक यू माइट हैव हर्ड अबाउट दीज अप्रोचेस। एक है रियलिज्म। द फर्स्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल एथिक्स इज रियलिज्म, एंड द सेकंड अप्रोच इज लिबरलिज्म और आइडियलिज्म। Have you guys heard about these two approaches? I'm sure anyone from PSIR might have heard about these two approaches. Okay. So here is the thing. Here is the thing. Realism क्या है? Realism asks you to shed idealistic standards or idealistic worldview and see things as it is. रियल पॉलिटिक्स सुना है? रियल पॉलिटिक या रियल पॉलिटिक? रियल पॉलिटिक बोलते हैं शायद। यस, रियल पॉलिटिक या रियल पॉलिटिक। सी थिंग्स एज दे आर। ओके, सी थिंग्स एज दे आर। सपोज एक एग्जांपल मैं देता हूं रियल पॉलिटिक का। यूएई यूएई की एक प्रिंसेस थी जो कि अपने बॉडीगार्ड के साथ, यूएई की प्रिंसेस थी एंड शी वाज अ प्रिंसेस ऑफ यूएई एंड शी रैन अवे विद द बॉडीगार्ड, विथ हर बॉडीगार्ड। ओके, एंड शी सेड दैट उसको ना बहुत टॉर्चरस कंडीशन में रखा जाता था, हर फ्रीडम वाज कर्टेल्ड। ओके, बेसिकली हर फ्रीडम वाज curtailed and she ran away in a yacht and she was intercepted off the coast of Goa by the Indian Coast Guard, and this princess, she was handed back by India to UAE, and UAE helped India in some concessions later. So ये है रियल पॉलिटिक्स। अब देखो प्रिंसेस जो थी, शी वॉज कमिंग टू इंडिया टू सीक असाइलम। She was saying, she made a video and she said, okay, she made a video and she said that, okay, my life is in danger. I am kept in a very solitary environment. It's like a prison, and I love my bodyguard. We are in love together, and yes, and princess ran off and she was coming to Goa to get asylum in India. But India did what? UAE made a request and India extradited this lady. They handed over her back, okay, and she went back to that luxurious prison that she was talking about. But UAE helped us in getting some concessions. एक ये एग्जाम्पल है रियल पॉलिटिक्स का, that we overlooked human right concern. We overlooked human rights concern. Okay, and we went and with our national interest कि ठीक है भाई, ऑयल हमें थोड़ा सस्ता मिल जाएगा तो यूएई से, और हमें थोड़ा सा ट्रेड कंसेशंस मिल जाएगा, हमारा माल ज्यादा जाएगा अब यूएई में, बिकॉज वी डिड दिस। सेम थिंग हैपन विथ जमाल खशोगी। नाम सुना है? सो ही वॉज अ सऊदी डिसिडेंट। He was a Saudi dissident who was critical. He used to write in the Washington Post. Okay. He used to write in the Washington Post. Okay. So Jamal Khashoggi, he went, okay, he went to the Saudi consulate in Istanbul, and there he went for renewal of his passport or something because he was still a Saudi citizen. और वहां पर उसको ब्रूटली मर्डर करके, एंड ही वाज डिसमेम्बर्ड। ओके, उसकी बॉडी को टुकड़ों में काट के एंड सूटकेस में भर के और फेंक दिया गया। यस, लेकिन लॉट ऑफ पीपल स्टिल ऑपरेट विद सऊदी अरेबिया, दे स्टिल हैव गुड रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया डिस्पाइट द फैक्ट दैट सऊदी अरेबिया किल्ड। उसमें एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जिनजियांग में क्या हो रहा है आपने देखा? उइगुर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है आपने देखा? स्टिल, ओके, स्टिल मुस्लिम कंट्रीज हैव नॉट कंडेम्ड चाइना। व्हाई? बिकॉज इनका चाइना के साथ लुक्रेटिव ट्रेड है। आपको बड़ा लगता होगा कि यार ये
कश्मीर पे दिन भर ओआईसी बोलते रहता है, ओके, ओआईसी बोलते रहता है दिन भर, व्हाई डजंट इट सेज एनीथिंग? लेकिन क्योंकि कश्मीर में द इश्यूज आर कंटेस्टेड, इश्यूज आर क्लियरली कंटेस्टेड, कि भाई हम वहां पर इसलिए नहीं मार रहे हैं लोगों को कि वो मुसलमान हैं, हम लोग वहां पर बिकॉज इट हैज बिकम अ सिक्योरिटी इशू। Okay, we are not killing them, or we are not, going after them because they are Muslims. It has become a security issue. If they are going to pick up arms, what are we supposed to do? लेकिन Xinjiang में क्या हुआ? Xinjiang is not a security issue, it is clearly an ethnic issue. Han versus Han culture versus others. The Uyghurs, they have a distinct Turkish identity. Okay, they have a distinct Turkish identity which is distinct from the majority Han people. लेकिन वहां पर भी नो ओआईसी कंट्री led by Pakistan, because OIC secretariat जो है, it has been captured by Pakistan, but so Pakistan has ensured Pakistan Islamic Republic of Pakistan, ठीक है, the defender, the country which calls itself the defender of the Muslim world, the sole nuclear power, has kept quiet because China is giving it non-stop aid and bailout. Pakistan, which otherwise calls itself on Palestine and Kashmir issue, itself as the defender and protector of the Ummah or the Ummat, right? उम्मा क्या होता है? ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, या ग्लोबल मुस्लिम एम्पायर जिसको हम कह सकते हैं, यस। लेकिन वो चुप है। इमरान खान से पूछा गया दैट व्हाट आर योर व्यूज ऑन उइगुर मुस्लिम्स, एंड ही सेड आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, because next day a bailout was going to come. Absolute stunned silence, absolute silence of all the Muslim countries. Why? Because lucrative trade है दोस्त, lucrative trade है. So this is realism, और उसके वजह से a lot of idealistic issues like human rights suffer. ये एक realism जो है, it's a very end justifies the means attitude. ओके, अब सेकंड अप्रोच की अगर हम बात करें, दैट इज लिबरलिज्म एंड आइडियलिज्म, एंड दिस इज समथिंग विच इज फॉलोड इन यूनाइटेड नेशंस, दिस इज फॉलोड इन अदर इंटरनेशनल मल्टीलैटरल एजेंसी। और यहाँ पर बोला जाता है दैट ओके, वी अंडरस्टैंड देयर इज सर्टेन रियल पॉलिटिक requirements of country, certain realistic requirement of country, but we have to rise above it so that we cater to, we rise above it and we cater to issues like human rights, territorial integrity of countries which are inferior or smaller, sovereignty of those country. Okay, तभी जाके हो पाएगा when we will rise above our realistic aspirations and we become idealistic. दोनों अप्रोच में कोई आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है? You guys want to ask any kind of doubt which you guys might have? Anyone? लिबरलिज्म, आइडियलिज्म और रियल पॉलिटिक या रियलिज्म में समझ में आया डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? रियलिज्म में यू लुक एट ओके व्हाट आर द इश्यूज एट हैंड and you act accordingly, whereas in liberalism or idealism you rise above those issues, okay, and you have a very idealistic standpoint through which you are going to operate. Okay, okay, all the state and non-state actors operating on the ethical plane. तो non-state actor में ISIS भी आ जाता है, और नॉन स्टेट एक्टर में लश्कर ए तोयबा भी आ जाता है, नॉन स्टेट एक्टर में इंडियन मुजाहिदीन भी आ जाता है, बट नॉन स्टेट एक्टर में और कौन आता है? एनजीओज भी आता है, विच आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट. Yes, by idealistic standards we should have,
आइडियलिज्म कौन फॉलो करता है दोस्त, पता है? कैनेडा एट द कॉस्ट, कैनेडा एट द कॉस्ट ऑफ destroying its relationship with Saudi Arabia, it condemned the killing of Jamal Khashoggi, and Saudi Arabia stopped export of maple syrup. No, not many countries dared, okay, not many countries dared to go against the killing of Jamal Khashoggi, okay, but this country, Canada, it said no, this is wrong. So what happened? They stopped maple syrup export, and maple syrup, a lot of stock of maple syrup that had to be destroyed, and Canadian exporters, they had to take the loss. But other countries, they did not wanted to antagonize Saudi Arabia, so they kept quiet on the Jamal Khashoggi issue. Yes. So, what are the common moral vocabulary that all the state and non-state actors who are operating on an ethical plane share? सबसे पहले equality है, limited not only to legal and formal equality but also in sense of informal political and diplomatic equality. ये जो इक्वालिटी है आपको यूएन में दिखेगा, यूएन में क्या इक्वालिटी है? वन नेशन वन वोट। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री है किरीबाती, इट्स अ कंट्री इन पैसिफिक ओशन, okay, it's a Pacific island, small island developing state, SIDS है, ठीक है? And there is a country, United States of America, आपको सभी को पता है, both these countries have an equal vote. Kiribati is smaller, Kiribati is smaller than a colony in India. कोई आपकी, सपोज आप किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी पे रह रहे हो, उससे छोटा है, इट्स लाइक अ 40 स्क्वायर किलोमीटर, 50 स्क्वायर किलोमीटर, मे बी सम फ्यू थाउजेंड पीपल, 50,000, लेस देन 50,000, आई थिंक 15,000 people live in Kiribati, but it's a sovereign state, it's an independent state, और यूएन में इसको वन वोट है, which is equal to, okay, which is equal to this thing, which is equal to United States, which is the global superpower. तो ये है equality in international arena. This is the true equality. ठीक है, यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब जगह पे ये इक्वालिटी आपको मिल जाएगी. देन कम्स इकोनॉमिक जस्टिस. इकोनॉमिक जस्टिस में क्या है? इट इम्प्लाइज टू रिमूविंग इनइक्वालिटीज इन इकोनॉमिक एक्सचेंजेस एंड ग्लोबल ट्रेड. ओके, implies to removing inequalities in economic exchanges and global trade. यहाँ पर क्या है, अगर आप देखोगे तो there are a lot of issues. There was an issue of Banana Republic. Do you guys know what was the issue of Banana Republic? So Banana Republic था क्या? Concept, origin term का कहाँ से आया है? So during the 1900s and the late 1800s, a lot of big fruit companies, they bought land in Latin America to grow banana for consumption in the United States and Europe. So these banana companies, what they did, they became very big and they became very influential and they control the economy. और उसके वजह से they started interfering. Okay, they started these companies, these banana companies, banana export companies, because they became so big, they started interfering in the local politics and undermining the sovereignty of these Latin American country. That's why they are known as Banana Republic. जहां पर बनाना वाले जो कंपनीज थी, they used to give some money to one colonel or one brigadier or one captain, and he used to do a coup on behalf of this banana company and install a favorable government which will grant concession on banana export. So कभी भी banana republic का term सुनोगे
बनाना रिपब्लिक का अगर टर्म सुनोगे तो ये यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। आई थिंक नाउ एवरीवन हैज दैट इन देयर नॉलेज बेस। तो आप कभी भी हिंदू वगैरह इंडियन एक्सप्रेस में सुनोगे कि बनाना रिपब्लिक बनते जा रहे हैं, या हम तो इट मीन्स कि वी आर अंडर कंट्रोल ऑफ बिग कॉर्पोरेट्स या other foreign influence. The country is under big corporates and foreign influence. Okay. इकोनॉमिक जस्टिस डब्ल्यूटीओ में भी होता है। आपने देखा होगा एक चीज की, ट्रेड डिस्टॉर्शन प्रैक्टिसेस, ये कवर्ड है डब्ल्यूटीओ के अंदर। तो बिग कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके, बिग कंट्रीज like the United States of America, it arm twists smaller country to open its economy for US products। और यूएस में क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स फार्मर दे गेट मैसिव सब्सिडीज। इंडिया में क्या होता है दैट अ फार्मर हैज अ 10-15 एकड़ मैक्सिमम लैंड, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। और क्यों, लैंड सीलिंग लिमिट है बहुत सारे स्टेट्स में, तो उसके वजह से दे कैन नॉट होल्ड लॉट ऑफ लैंड, वेयर एज ऑन एवरेज एन अमेरिकन फार्मर ही हैज 600 to 1000 एकर्स, एवरेज है ये। Otherwise, other farmers they might have 5,000, 10,000, 15,000 acres of land, and they have this airstrip in their farm। इतना बड़ा है उनका फार्म कि they have an airstrip to spray pesticides। They use a biplane to spray pesticide। वैसा क्यों होता है? Because of the kind of subsidies that the United States government give to these farmers। Okay, because of the United States subsidy। और उसके चलते क्या होता है, they have a lot of surplus production of certain crops। they have a lot of surplus production। तो उसके वजह से they have used this WTO to flood, they have used this WTO practices या WTO whatever the clauses are, to flood developing countries market with their cheap goods, cheap cotton, cheap corn। Okay, and which has led to the death of agri sector in these countries। so how justify this is, and when these small countries they try to revive their agriculture, United States of America it goes to the trade disputes wing and files a complaint on the country to punish it। so this is highly unethical। yes, green box, amber box and जो हमने डिस्कस किया था, इफ यू गाइज रिमेम्बर, ये ग्रीन बॉक्स, येलो बॉक्स, एम्बर बॉक्स था। ओके, ग्रीन बॉक्स था विच वेयर ओके टू गो, yes, amber box था which were had trade distortion practices। AOA में था, if you guys remember, WTO's agreement on agriculture। there was also this phytosanitary standards, if you guys remember discussing phytosanitary standards, जिसको यूज करके United States of America stops exports from other countries। okay, it stops export from other countries। ये एक बड़ा इशू है इकोनॉमिक जस्टिस के लिए, दैट वी नीड टू ट्रीट ऑल द कंट्रीज इक्वली, ऑन एन इक्वल फुटिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक कंट्री आर्म ट्विस्ट कर रहा है दूसरे कंट्री एंड इट इज किलिंग, ओके, इट इज किलिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर और द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। डंपिंग सुना है? डंपिंग, इंडिया में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है चाइना से। बहुत सारा सब्सिडी लेस्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, सब्सिडी लेस्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, और चाइना क्या करता है, उसको डंप करवा देता है टू किल द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिसीविंग कंट्री। तो इंडिया क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी ला देती है। आपने देखा होगा एक प्रॉब्लम आई थी ड्यूरिंग द 2000s टू लेट 2010s। इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी कि चाइना से ऐसा ऐसा सामान आ रहा था, ओके, योर पेंसिल बॉक्स 5 रुपीज, योर वाटर बॉटल 7 रुपीज। हाउ इज व्हाट इट वाज पॉसिबल? 7 रुपए का पेंसिल बॉक्स 5 रुपए का कैसे पॉसिबल था? 2 रुपए के नेल कटर कैसे पॉसिबल था? हाउ इट वाज पॉसिबल?
because of the subsidies given by the Chinese government. They started to send, they started to send those toys and those products to kill the industry of India. And they said, okay, let us first kill the toy industry of India, then we will, stop the subsidy, and the Chinese toy industry, they will rule the world. उसके बाद लेकिन आप जाते थे टॉय वाले के पास, एंड ही यूज्ड टू से कि 40 रुपए हो गए, लेकिन आप बोलते थे यार 5 रुपए है, इस पे तो 5 रुपए लिखा हुआ है, वाई यू आर सेलिंग इट फॉर 40 रुपीज? एंड ही सेड दैट सर 5 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लग चुकी है। अब इसको लुक्रेटिव ना बनाने के लिए, ऑलराइट, इसको लुक्रेटिव ना बनाने के लिए सरकार ने 35 रुपए का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है। So this was the issue with China. Lot and lot, a lot of subsidies. It was given to the Chinese manufacturing sector to kill competition in other countries. 4 रुपए 5 रुपए में, you can get a whole toy set. I still remember वो बाकुगान करके एक आता था, बेब्लेड आता था चाइना से, तो वो चाइनीज बेब्लेड यूज्ड टू कॉस्ट लाइक 20 रुपीज, एंड द नॉर्मल बेब्लेड इट यूज्ड टू कॉस्ट लाइक 300 रुपीज। तो ये क्यों हो रहा था? What was the reason why it was so cheap? It was to kill the toy industry in the host country. Then mutual respect and non-interference, it is also important, but ये एक लिमिट तक होना चाहिए। इस पे भी अब हम डिस्कशन करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग एक ये टॉपिक है, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई इनवाइट योर व्यूज ऑन दिस। दो इश्यूज हैं। सबसे पहले म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ कस्टम्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ कस्टम्स। अभी देखो कीनिया में क्या हुआ था। कीनिया और यूएस का जो प्रेसिडेंट्स थे, दे केम ऑन ये व्हाट यू कॉल दैट, they came together in a public conference, in a press conference, ठीक है। अब ध्यान से सुनना and you give me your opinion. So कीनिया जो है वहां पर क्या है, एंटी LGBT लॉज है। So वहां पर you can get punished for being lesbian, gay, bisexual, transgender. Whereas United States, आपको पता है गाई हम कहते ही हैं इसको, ग्लोबलिस्ट ग्लोबो होमो एम्पायर, सो उसका स्टेट रिलीजन ही है यूएस का, to further the cause of the LGBTQ community. अब यहाँ पर क्या था, that United States started pressuring Kenya, Joe Biden and even Obama before him. They said that Kenya needs to change its LGBTQIA plus laws. Otherwise, we are going to sanction. Kenya. उसके साथ उगांडा में भी हुआ था. You might have watched that video. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. वाला देखा है वीडियो? Yes. So उगांडा के साथ भी सेम प्रॉब्लम थी. United States said that unless you change your LGBTQIA plus approach, we are not going to do trade with you. We are going to put sanctions on you. We are going to fund the NGOs. So कीनिया का जो प्रेसिडेंट था, and his name was Uhuru Kenyatta, and he said, Mr. President, respect African traditions. एक और प्रेसिडेंट था उगांडा का, मुसीवेनी नाम था उस बंदे का, मुसीवेनी, and he said the same thing. Respect African values, respect culture, African culture. Do not interfere. We have a staunch Christian tradition. We have a staunch Aboriginal tradition which goes against this LGBTQIA plus ideology. Please respect our worldview. उसी तरीके से आप देखोगे, United States has a very bad habit. United States has a very filthy habit of interfering in the sovereign affairs, in the internal affairs of other countries. ये एक बड़ा issue है. That's why United States is facing pushback. आप देखोगे तो जब रशिया को उन्होंने इन्वेड किया था, रशिया ने यूक्रेन को जब इन्वेड किया था, so United States expected that the world will rise in unison and condemn Russia, but it did not happen. What happened was, instead, lot of countries including Saudi Arabia and UAE, China,
इंडिया, इट वेंट टू द रशियन कैंप एंड सेड नहीं कोई बात नहीं, ठीक है. व्हाई? बिकॉज डीप सीटेड anger against this interference. They are not respecting, just like Mr. Museveni of Uganda or President Uhuru Kenyatta of Kenya said, the United States need to, okay, the United States need to respect African values and African tradition, and it is not doing that. We will go to the Chinese camp, we will go into debt, but we are not going to, okay, we are not going to uh, uh, change the laws, the LGBTQIA laws, and fiddle with our culture. यहां पर एक दूसरा एक सुनो. नाउ यू हैव हर्ड वन पार्ट, दूसरा सुनो, नॉन इंटरफेरेंस. एक एग्जांपल मैं देता हूं, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. इंडिया फॉर 3 years it said nothing. For 3 years, Bangladeshi Hindus and Bangladeshi dissidents, Bangladeshi supporters, okay, which started with Cyclone Bhola. सुना है? साइक्लोन भोला आया था 1969 में, और वहां पर since there was racism in the Pakistani establishment की काले छोटे बंगाली, they don't deserve our sympathy. ये था कि हम गोरे पठान हैं, हम गोरे लंबे पंजाबी पठान हैं, ओके, और ये जो हमारे ईस्टर्न फ्रंट में है, ईस्टर्न हमारा पार्ट ऑफ कंट्री है, काले छोटे बंगाली, दे डोंट डिजर्व आवर सिंपैथी. दैट्स व्हाई साइक्लोन भोला में क्या हुआ, दे स्टॉप्ड एनी एड, किसी टाइप का एड नहीं हुआ. लैक्स एंड लैक्स ऑफ बंगाली पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ द नॉन एक्शन ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट. ऑल्दो एड्स वेयर प्रोवाइडेड टू पाकिस्तान, उन्होंने पता है एड्स का क्या किया था? जो एड पाकिस्तान को मिला था फॉर द बंगाली पीपल, उसका ना कमोड बना लिया था, वो अपने टॉयलेट्स में कमोड इंस्टॉल कर लिया था पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटर्स ने. सो दैट हैपेंड, ओके, दैट हैपेंड, एंड उसके वजह से फॉर 3 years इंडिया सेड नथिंग. देयर वाज नॉन इंटरफेरेंस फ्रॉम इंडियन साइड. ऑपरेशन सर्चलाइट सुना है आपने? ऑपरेशन सर्चलाइट वाज गोइंग ऑन. ऑपरेशन सर्चलाइट वाज गोइंग ऑन. उसमें millions of Bengalis were killed, millions of Bengalis, Hindus were targeted, millions of Bengalis, over 3 million Bengali women were raped, over 3 million Bengali women were raped, and over lakhs of rape kids, rape child जिनको बोलते हैं the child who are product of rape, lakhs of rape child were born in that 2-3 years. But in 1971, when refugees started pouring in and India had millions of Bengali refugees, India said that it's over. Non-interference is not an option. उसी तरीके से आप देखोगे तो नाजीज जो थे वर्ल्ड वॉर 2 में, दे स्टार्टेड किलिंग द ज्यूज, okay, they started gassing the Jews. So when America and other parties, they came to know about it, they said that now it is high time that we invade the Nazis, okay, because their atrocities, it is getting to a point of no return. Then peaceful coexistence and cooperation. अगर आपने देखा होगा, हमारी ये ऑफिशियल पॉलिसी थी पंचशील, which failed spectacularly. Non-aligned movement with Tito and Gamal Abdel Nasir, आपको अगर याद होगा तो ये ऑफिशियल इंडियन स्टेट की पॉलिसी थी इन द initial stages, that we will, okay, follow the Panchsheel program of peaceful coexistence with China, peaceful coexistence with India's neighbor, okay. बट वहां पर भी काफी ज्यादा इश्यूज आ गए थे, और यू ऑल नो द हिस्ट्री, कैसे चाइना के साथ वॉर हो गया, पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया, श्रीलंका में हमें IPKF भेजना पड़ा. सो वहां पर क्या था, रियल पॉलिटिक गेम, ओके. आइडियलिज्म था इंडियन स्टेट में इन द इनिशियल डेज, एक बहुत भयानक आइडियलिज्म था. पंचशील का अगर आप देख लो, नॉन अलाइन मूवमेंट का जो देख लो, एटम्स फॉर पीस इनिशिएटिव, उस पे देख लो. So all of them, India was had a very peaceful posturing, okay. But the real politic, it hit us, and we had to go to wars, okay. We had to bolster our defense. ऐसा आपको पता है, during the initial stages, Nehru wanted
to abolish the army because he believed, okay, in a peaceful coexistence and cooperation. It was only after 1962 that we were awoken, और उसके बाद हमने 3 साल we actually did something on the army front, तो हम बच पाए. पता है, we went very close. We went very close to losing our country in 1965. Nobody tells you this. But अमृतसर और दिल्ली के बीच में, अमृतसर, सपोज दिस इज अमृतसर और दिल्ली के बीच में, देयर वाज नो मेजर आर्मी फॉर्मेशन. तो अगर अखनूर में हम हार जाते, अगर हम वो हार जाते वहां पर, आई थिंक देयर वाज बैटल ऑफ असल उत्तर एंड बैटल ऑफ बसंतर हुआ था, उसमें इंडिया वन, लार्जेस्ट टैंक बैटल. अगर मान लो वहां पर एक बैटल भी हम हार जाते, तो देयर वाज नो आर्मी टू स्टॉप द पाकिस्तानीज फ्रॉम मार्चिंग फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली. ओके, देयर वाज नो आर्मी टू स्टॉप. ये हमारा थिंकिंग था, इतने बैकवर्ड थे हम दैट हम ये सोच रहे थे कि आर्मी को ही अबॉलिश कर देते हैं, आर्मी को ही अबॉलिश कर देते हैं. सो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, व्हाट आई मीन टू से हियर, what I mean to say here is that peaceful coexistence and cooperation, peaceful coexistence and cooperation is only up to a limit, but when it threatens your sovereignty, you have every right. It is your ethical right, my friend. It is your ethical right to wage war. Once your sovereignty is threatened, once your integrity is threatened, okay, once your structure is threatened, it is your solemn duty to defend yourself. Then promoting equitable development and respect for human rights, it is very important. ह्यूमन राइट्स का इशू था, वो हम डीप में डिस्कस करेंगे व्हेन ह्यूमन राइट्स को हम एज अ सेपरेट टॉपिक लेंगे. बट यहाँ समझो दैट इंटरनेशनल एथिक्स में, ओके, इंटरनेशनल एथिक्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दूसरे कंट्री में क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, वी कॉल इट आउट. जब भी हमने डिस्कस किया था ना, लिबरलिज्म आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म, उसमें क्या था, नो मुस्लिम कंट्री इज कॉलिंग आउट चाइना फॉर द फियर ऑफ trade trade loss in trade. Okay, then finally we come to issues and challenges in international ethics. The most common issue in international politics is how to reconcile one's interest, that is national interest को कैसे हम reconcile करें values के साथ. Okay, how can we can reconcile the needs of the nation with the values which are needed for international ethics and diplomacy. Okay. Why world is biased towards India because of Hindu? The world is not biased towards India. Okay, the world is not biased towards India. That is a false belief. हम खुद अपने तरफ biased हैं. All right, हम खुद अपने आप को respect नहीं करते हैं. That's why people take us for granted. Okay, people take us for granted. Yes. Okay. It has been widely observed in the realms of international relations that nations with huge political, economic and geostrategic interest, अब ये कौन है huge political, ये है US, ये है China, ये है countries like India, जिनका एक existence बहुत बड़ा है. जो countries like Solomon Islands, countries like Kiribati, countries like Tuvalu, they are like a blip. उनका टोटल एरिया आपके कॉलोनी से छोटा है. जितनी बड़ी आपकी कॉलोनी है, जितना बड़ा आपका इंडिया गेट का एरिया है, उतना बड़ा तो उनका पूरा कंट्री आ जाता है. उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 5,000, 4,000, 6,000. तो उनका ह्यूज इंटरेस्ट नहीं है, उनको बस चाहिए कि यार लेट मी एग्जिस्ट इन साइलेंस. बट आपकी कंट्री कॉम्प्लेक्स है, बिलियंस ऑफ पीपल लिव्स हियर. ओके, बिलियंस ऑफ पीपल लिव इन योर कंट्री. योर कंट्री हैज अ ह्यूज लैंड मास, इट हैज ह्यूज बॉर्डर्स, इट शेयर्स ह्यूज बॉर्डर्स. तो आपकी कंट्री क्या है, आपकी कंट्री कॉम्प्लेक्स है. So that's why you have huge interest, huge political, economic and geostrategic interest. And you try to influence the domestic policies of other nations so that you are able to fulfill those interests. अब जैसे यूएस है, वो क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरे कंट्रीज को. ओके, यूक्रेन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एड्स क्यों भेज रहा है, ताकि उसके इंटरेस्ट, दैट इज सिक्योरिटी, रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को रोक दे. इंडिया श्रीलंका को बेल आउट क्यों कर रहा है, ताकि वो चाइनीज कैंप में ना जाए और चाइना को अपने आइलैंड पे ओके बेस ना दे दे.
इंडिया का भी इंटरेस्ट है श्रीलंका को हेल्प करने में, यस. वाई, वाई, what was the example? France, yes, France. Why France is so heavily interested in sub-Sahara Africa? Because उसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना है, उसको यूरेनियम चाहिए अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, उसको क्या चाहिए, कंसिस्टेंट फ्लो चाहिए ऑफ गोल्ड इन इट्स कॉफर्स, यस. अब क्या क्या चैलेंजेस है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वन नेशन फेसेस, एथिकल चैलेंजेस, टेररिज्म, ऑलराइट. आप देखो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, तो इसके दोनों एथिकल डायमेंशंस अलग अलग हैं. टेररिज्म इज अ बैड थिंग. 9/11 हैपेंड, 26/11 happened in Mumbai. It is a bad thing. Civilians died. But was invading Iraq and Afghanistan justified? That is the other, okay, that is the other facet. ठीक है, 9/11, 26/11 हुआ, but how about killing millions of Iraqis and millions of Afghanis? Afghans, not Afghanis. Afghani mat bolna. Afghani is the currency. Afghans is the ethnic identity. I did that mistake with one Afghan contact of mine, and he was very livid, and he was not very happy, and he said, "भाई, ये तुम मुझे currency क्यों बोल रहा है? Afghan होता है, Afghan." Okay. So Iraqi and Afghan, all right. Iraqi and Afghan, जो है, millions of Iraqis and Afghans they died. Okay, millions of Iraqis and Afghans they died due to the global war on terror. How justified it was, it is for you to understand. Then climate change का एक और issue आ रहा है. Climate change is a reality. Climate change is happening. Okay, climate change is a reality. Climate change is happening. But how justified it is to ask the developing countries, how justified it is to ask the developing countries, my friend, to stop their production of coal, which is so important for their population. How justified it is to go to developing country and say that Mr. Developing country or Mrs. Developing country, see, here is the thing that we have, okay, हमारा development हो गया, we are now developed, we used industrialization, we used factory, we polluted the world, and now we have become developed. But now you stop your development. Why? Because climate change. Okay, उसी के लिए एक term है which I have discussed in the environment class, and that is common but differentiated responsibility. क्या है? Common but differentiated responsibility. Common मतलब सभी का प्रॉब्लम है. क्लाइमेट चेंज इंडिया को भी इंपैक्ट करेगा, नो मैटर कहां पर है आप इन दी डेवलपमेंट स्टेज. Climate change is going to impact you. We already saw in Chennai floods. Yes, we already saw in Kerala floods that it was due to climate change. But we have a common responsibility, but it is differentiated. That is, developed countries ought to do more. Developed countries which have been at the forefront of pollution, they ought to do more in this regard. Okay. देन रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अभी देख रहे हो 700 पाकिस्तानीज, sorry, 400 Pakistanis who were included in the 700 people who died off the coast of Greece. तो वहां पर ग्रीस में प्रोटेस्ट हुए थे that why there were rumors that the Greek coast guard, okay, the Greek coast guard, it deliberately sabotaged the ship in which these 700 people were coming to Greece and they died. यहाँ पर एक ethical dilemma है that you are a refugee, you are looking for a better life. Okay, so should nation states who have a better standard of living, should they grant it? Okay, should they grant these refugee status? But problem क्या है, आपने देखा, they are not compatible with the values, European values. They are not compatible with the Western values. आपने देखा जर्मनी में मास रेप्स होते हैं. जर्मनी में एक दो रेप नहीं होता है. These refugees, what they do mass rapes. मतलब what happens is that suppose Christmas है या कोई ऐसा Thanksgiving है, okay,
क्रिसमस, यहाँ कोलोन इंसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्रिसमस या थैंक्स गिविंग इस टाइप का कुछ होता है, तो लॉट ऑफ विमेन एंड मेन दे कम टू अ स्क्वायर एंड दे सेलिब्रेट, सो दैट इज द जर्मन कस्टम, एंड द विमेन, जर्मन विमेन, दे फील सेफ कि यार आई एम इन माई कंट्री, बट व्हाट हैपेंस, hundreds of Afghanis and Iraqis and people from the Middle East, Syrians, they come charging towards this square and they start raping the women. And the police is so shocked because police कौन है वहां? The police is also meant to handle the mellow people, the mellow Europeans. They do not know how to handle the violent Orientalists. देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा रेसिज्म मैं कर रहा हूं, आई एम मेकिंग सम जनरलाइज अजम्पशन, बट दिस इज द फैक्ट. ओरिएंटल वर्ल्ड में अगर आप देखो, इस थोड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखो या मिडिल ईस्ट में देखो, द पीपल आर वायलेंट. व्हाई? बिकॉज इट्स अ फ्यूडल सोसाइटी. दे आर नॉट, ये मैं नहीं बोल रहा कि पीपल आर बैड, but people have a different standards of morality and ethics, and this might take some years to change, some decades to change. But you know, when these refugees, they go to other countries, okay, they wreak havoc. Problem kya hai yahan par, that these refugees are 14 to 21-year-old male, and they are at a very sensitive age, बहुत sensitive age group में, and they are without any guidance. उनको पता नहीं होता. 14 साल के लौंडे को अगर अकेला छोड़ दोगे आप, तो वो क्या करेगा? गलत ही हरकतों में पड़ेगा. अगर कोई उसका पेरेंट नहीं है गाइड करने के लिए, टीचर नहीं है, तो वो क्या करेगा? क्रिमिनल्स के ही पास जाएगा. सॉरी. तो ये एक इशू है. ओके, सॉरी फॉर दैट. सो दिस इज एन इशू. कुछ एक्शन नहीं लेते बिकॉज दे आर टू स्टन्ड. व्हाई पीपल डोंट टेक एक्शन? दे आर टू स्टन्ड. ऑल्दो देयर इज पुश बैक. अगर आप देखोगे जर्मनी में अल्टरनेटिव फ्यूर डॉइचलैंड एक पॉलिटिकल पार्टी है, एएफडी करके. अल्टरनेटिव फ्यूर डॉइचलैंड कहा जाता है कि नाजी पार्टी से लिंक्ड है. इट हैज बिकम द लार्जेस्ट पार्टी इन द पोल्स, और हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में दे विल बिकम, एंड इट इज अगेंस्ट, इट इज एंटी इमिग्रेशन. वो जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, दैट शी आल्सो केम ऑन द वेव ऑफ एंटी इमिग्रेशन. मरीन लेपेन, नाम सुना होगा आपने. शी ऑलमोस्ट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस. शी वाज आल्सो राइडिंग ऑन दिस वेव. ब्रेक्सिट पार्टी ऑफ नाइजल फराज इन यूके, दे आल्सो गेन्ड. व्हाई? बिकॉज दे वर एंटी इमिग्रेशन. सुनाक, ऋषि सुनाक क्या कर रहा है? he is saying that if you will come to UK illegally, we are going to deport you to Rwanda. रवांडा के साथ वो एक उनका अग्रीमेंट हो गया, जहां पर रवांडा को 20 बिलियन पाउंड्स देंगे एंड रेफ्यूजीज को भेजेंगे रवांडा. ओके, यस. फिनलैंड में देखो सना मारीन को हटा दे, तो देयर इज पुश बैक, नो डाउट. और ये एथिकल इशू भी है ना. देखो, देयर आर लॉट्स ऑफ इनोसेंट रेफ्यूजीज आल्सो, innocent refugees, but there are also criminals refugees. तो who to allow, to not? एक इसका सॉल्यूशन है दैट आप विमेन एंड चिल्ड्रन को आने दो, एंड फैमिली मेन को आने दो ओनली. डोंट अलाउ men in the bachelor men in the 14 to 30 एज ग्रुप. ये एक आइडिया है. दिस इज वन ऑफ द आइडियाज. बट प्रॉब्लम यहाँ क्या है रेफ्यूजी क्राइसिस में? दैट the system, western system is soft because the population is mellow and soft, it is educated. That's why वो इस टाइप का उनका rules and laws है. But they get shocked when they see people from the Middle East with a different value system. अब प्रॉब्लम यहाँ देखो क्या होती है. In Syria, in Iraq, in Afghanistan, women are not allowed to go out. But when they go to the Western countries, they see women wearing shorts. They see, women moving out freely. So they think, these boys, they think, यार मेरे घर पे मेरी मदर तो अंदर बुरके में रहती है, या शी इज महरम के साथ चलती है, या अगर उसको मार्केट जाना है तो 2 आदमी जाता है उसके साथ, और ये औरत फ्रीली बाइसाइकिल पे चल रही है एंड शी इज ड्राइविंग अ कार, जरूर ये लूज विमेन होगी. तो ये एक लूज विमेन का इनका एक गलत माइंड में आ जाता है दैट दिस विमेन, this woman, if she is going in a car and she is wearing shorts and she is going in the market, so she must be loose and she must be open to my advances.
तो ये एक है, एंड दे कैन नॉट कीप विद दिस। लिबरल वेस्टर्न सिस्टम को समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई हो क्या रहा है, ये मास रेप्स क्या होता है। मैंने 5000 साल की हिस्ट्री में, जर्मेनिया के हिस्ट्री में, ट्यूटोनिक फॉरेस्ट से लेके आज तक, बिस्मार्क से लेके आज तक ये सुना ही नहीं था। उनको समझ ही नहीं आता है हाउ टू रिस्पॉन्ड, बिकॉज उनका लीगल सिस्टम इज मेंट फॉर सॉफ्ट एंड मेलो पीपल। अब समझ आया? डिड यू गेट व्हाट इज द रेफ्यूजी क्राइसिस? I did not only cover this for your ethics wala part, I also covered it for maybe in your essay part. You can write this answer. Okay, you can write this perspective that the इसीलिए आप देख रहे हो तो lot of country में death penalty वापस आ रहा है. Why? Because they say we have to be ready now, because we are welcoming people from different culture. We are welcoming people from a different culture. Nuclear weapons again, disarmament एक बहुत बड़ा एक issue है. Whether to disarm, इंडिया ने एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की है. व्हाई? दे आर सेइंग, इंडिया का भी एक वैलिड पॉइंट है दैट यूएस, यूके, फ्रांस, इन सारी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया. नाउ दे आर सेइंग सेम थिंग दैट हैपेंड इन एनवायरमेंट. अपने आप को डेवलप कर लिया और हमें क्या बोल रहे हो भाई तुम नहीं करो, बिकॉज तुम उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हो. रिस्पॉन्सिबल तो आप भी नहीं है जनाब. इराक में आपने क्या किया, लिबिया में क्या किया, जहां जाते हो वहां पर गंद मचा के आ जाते हो. सीरिया को क्या किया? सीरिया was the only secular country in the Middle East, a thriving secular country. They turned it into dust. Bloody lord of chaos. Very correct. तो आप ये नहीं बोल, इंडिया का सेम बात है. इंडिया को बहुत प्रेशर कर रहे हैं, साइन कर लो एनपीटी, ये कर लो वो कर लो. मतलब नहीं करेंगे, क्या कर लोगे? ये बकवास है. ठीक है, वट एवर यू आर सेइंग इज बकवास. दैट यू आर इंटाइटल्ड टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन. ओके, यू आर ब्लडी इंटाइटल्ड टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन, एंड यू आर सेइंग नहीं नहीं आप नहीं रख सकते हो न्यूक्लियर वेपन बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ. वी आर सीइंग व्हाट यू डिड इन सीरिया, वी आर सीइंग व्हाट यू डिड इन इराक. thriving cultures destroyed to dust. Okay, then global commons. अब global commons होता क्या है? Things which are outside the national jurisdiction of countries, जैसे international water, जैसे space, जैसे minerals in the international waters. इस टाइप की चीजें होगी global commons. ठीक है. हाँ, deep sea exploration. यहाँ पर क्या है, एक ethical dilemma that there is a lot of hypocrisy. यूएस आपको पता है ना, इट इज नॉट अ सिग्नेटरी टू दी यूएन क्लॉज. इट इज नॉट बिग कंट्रीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल पुलिसिंग. दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्लोबल फ्रेमवर्क इटसेल्फ. अपने आप को यूएसए ट्रीट्स इटसेल्फ एज अ ग्लोबल पुलिस. ओके, इट ट्रीट्स इटसेल्फ एज अ ग्लोबल पुलिस एंड इट इज नॉट अ सिग्नेटरी टू यूएन क्लॉज. ग्लोबल कॉमन्स पे पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था. देन ग्लोबल कॉमन्स और क्या होता है? ग्लोबल कॉमन्स यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है दोस्त. हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, ऑल्दो इट डजंट एग्जिस्ट. ताजमहल, ओके, ताजमहल. देन थिंग्स लाइक गाजा, पिरामिड ऑफ गाजा, गीजा, राइट, सॉरी नॉट गाजा, पिरामिड ऑफ गीजा, यस, जयपुर सिटी. सो दीज आर ग्लोबल कॉमन्स. ये विश्व धरोहर है. इनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? विश्व धरोहर, है ना, यही बोलते हैं ना, विश्व. ये वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको मेंटेन करना. ओके, वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको मेंटेन करना, बट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड. पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड. अभी सीरिया में दे डिस्ट्रॉयड एलेप्पो. एलेप्पो वाज अ हिस्टोरिकल सिटी. सीरिया में they let Aleppo be destroyed, and Syria is a historical city. It is part of the global commons. वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है एलेप्पो. एलेप्पो में देयर वर अ लॉट ऑफ म्यूजियम्स जहां पर प्री इस्लामिक एरा का आर्टिफैक्ट्स रखा गया था. ओके, प्री इस्लामिक एरा का, एंड आइसिस केम एंड डिस्ट्रॉयड. व्हाई? बिकॉज दे सेड कि बिफोर इस्लाम नथिंग वाज देयर, तो लेट अस प्रिटेंड कि इसको भी हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं. व्हाटएवर सीरिया का प्री इस्लामिक पास्ट था, ओके, सीरिया का असीरियन हेरिटेज, एग्जैक्टली, ओके, मेसोपोटेमियन हेरिटेज, उन सबको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं.
देन आईपी इशू है चाइना का, मैंने बताया था, इफ यू गाइज रिमेंबर, चाइना रिस्पेक्ट नहीं करता है, दैट्स व्हाई नो कंट्री वांट्स टू डू R&D इन चाइना, बिकॉज दे नो दैट हम R&D करेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर लगाएंगे, चाइनीज दे विल कम एंड रिवर्स इंजीनियर इट. So IP issue is a very big issue. A country which will have robust IP laws, they will attract R&D, global R&D. जैसे इंडिया में एक अच्छा robust IP law है. There is a good IP law barring compulsory licensing, which is limited to drugs, which is limited to important drugs. India respects the intellectual property of the global companies. ठीक है? That's why they are interested in investing in India. Then undemocratic global governance, you have to call it out. Okay, you have to call it out. There is lack of democracy, but इसको भी एक तरीके से देखना चाहिए. अगेन देखो, एक तरीका है एज एन एथिक्स इंस्ट्रक्टर, एज अ GS4 इंस्ट्रक्टर मैं आपको बात बोलूंगा, तो दैट इज अनडेमोक्रेटिक ग्लोबल गवर्नेंस. तो बहुत सारे कंट्रीज है जहां पर, जैसे थाईलैंड है, जैसे इजिप्ट है, वहां पर अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए हैं. ओके, थाईलैंड में इलेक्शंस बहुत दिन से नहीं हुए हैं. देयर इज अ जनरल चैन, प्रयातो चान जो है, ही इज स्टिल प्रिसाइडिंग ओवर द थाई डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, एंड अभी तक वहां पर इलेक्शन नहीं हुए. तो यू कैन नॉट कॉल इट अ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एट ऑल. बर्मा में, बट वहां पर भी इंडिया इज सपोर्टिंग बर्मा. व्हाई? बिकॉज रियल पॉलिटिक्स, उसको पता है कि अगर हम बर्मा को सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हम ऑंग सान सूची को सपोर्ट करेंगे, तो बर्मा विल गो इनटू द चाइनीज कैंप, will go into the Chinese camp. Okay, so ये एक issue है. But from a personal standpoint, I'll say hush with the democratic nonsense. Okay, hush with the democracy nonsense. The thing is, democracy is not compatible. Democracy as a system is not compatible with all the civilization. It is inherently chaotic. अगर आपका civilization is not able to handle chaos, then you are doomed as a democratic country. But that is again my personal view. एक एथिक्स के इंस्ट्रक्टर के व्यू पॉइंट से यू हैव टू कॉल इट. ओके, ये आपको लिखना पड़ेगा. देन फंडिंग ऑफ एनजीओस इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनजीओस हैव बीन यूज्ड टू destabilize, okay, to destabilize these मल्टीपल कंट्रीज. ओके, फंडिंग ऑफ एनजीओस के लिए ही हमने फेरा और फेमा लॉ बना दिया था. ठीक है, इफ यू गाइज रिमेंबर. अरे वो मेरा डॉग started biting my hand, so I had to push him away. Okay, I have to push him away. That's why बीच में मेरा आवाज शॉर्ट पिच हो गया था. So फेरा एंड फेमा, ओके, फेरा एंड फेमा जो लॉ है, FCRA आपको पता होगा, FCRA लाइसेंसिंग. व्हाई? ऑलराइट, फंडिंग ऑफ NGOs, that is the issue. Alright, funding of NGOs, that is a very big issue. Yes, Greenpeace, अगर आप देखोगे, Greenpeace, what it was doing, it was stalling the important infrastructure projects. It was stalling the important infrastructure projects. बहुत सारा है, आप देखोगे तो there was also this Kudankulam protest which was carried out by shady NGOs. Yes, there was also Sterlite copper plant south में. Tamil Nadu would have become a surplus, a state surplus of Sterlite. Yes, yes, it is correct. It is banned, I think. Yes, it is banned. Okay. RA forest, Mumbai people, they suffered, okay, because of NGOs intervention. Or RA जो था, it had a forest area of very less. Okay, RA had a forest area of very less. It had a very less area, right? It had a very less square feet per square feet. Yes. So it was detrimental. NGOs का funding जो है, sometimes it is detrimental, but at the same time some NGOs are doing good work and we should protect them. So ये भी एक ethical dilemma है, that till where you want to go. Okay, till where you want to go in this regard. कहाँ तक आप अपने आप को stretch करना चाहते हो. So these are your challenges. These are your approaches. These are basically the standards which you need to adopt in international relation, and I hope you are satisfied with the class because हमारा topic खत्म हो गया. Okay. हमारा topic is over. Any questions that you guys might have in this topic, ethics in international relations? Yes. Okay. We are on the final leg. We are on the final leg of our classes. I think
this Sunday will be the last class of ethics for this thing, theory, ethics theory. उसके बाद Monday से we will be doing case study discussion, 2 case studies per class and 2 answers per class, 2 case studies per class and 2 answers per class. ठीक, okay.